Hello, dear student. This is teachings of notes in subject civics of Kendra Vidyalaya class 7. In chapter number 6, understanding media of this is of civics chapter. Uh, Understanding media. What do you mean by media? First, we will discuss the meaning and intro of all about media. What is media? Media, the term media means the various way through which we can communicate any message in the society is known as media. मीन्स हम जिस भी तरीके से हम अपना मैसेज को कम्युनिकेट करते हैं उस जिसके भी द्वारा उसको उसे कहा जाता है मीडिया. ठीक है. मीडिया इज़ अ प्लूरल फॉर्म ऑफ सिंगुलर फॉर्म ऑफ द टर्म मीडियम. जो मीडिया जो टर्म हमें मिला हुआ है वो मीडियम टर्म से हमें वर्ड से हमें लिया गया है. ये मीडिया इज़ ऑल्सो नोन एज अ मास मीडिया विच मीन्स द मीडिया स्प्रेड communicate message amongst millions of people or the message or population across the country is known as mass media. mass media मतलब जो बहुत बड़े लेवल पे जब हमारे जो मैसेज कम्युनिकेट किए जाते हैं लाखों करोड़ों लोगों में हमारे पूरे देश में जिस तरीके से मैसेज कम्युनिकेट किया जाता है उसे मास मीडिया कहा जाता है. मीडिया रेफर्स टू ऑल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन. हर तरीके के कम्युनिकेशन को जिस भी तरीके से कम्युनिकेट किया जाए मैसेज को उसे मीडिया कहा जाता है. और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस हमारे कंट्री में बहुत सारे हैं जैसे कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, है ना. तो मीडिया और मास मीडिया इज़ डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. देयर आर टू मेजर ग्रुप्स ऑफ मीडिया. First one is print media in which include print media, newspaper, books and magazine. And another one is the electronic media which include TV, internet, mobile, telephone, fax, telegram, radio, etc. Okay. The media play a very important role in providing news to us. ठीक है. जो मीडिया है वो हमारे लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमें समाचार देने में. ओके. What are the types of media on the basis of level? जो उसको कैटेगराइज किया गया है लेवल के अकॉर्डिंग वो है इंटरनेशनल और ग्लोबल मीडिया. जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलता है वो होता है इंटरनेशनल मीडिया. फिर है हमारा राष्ट्रीय लेवल पे, दैट मीन्स नेशनल लेवल मीडिया. अनदर इज स्टेट लेवल मीडिया एंड द फोर्थ वन इज लोकल लेवल मीडिया. ओके. नाउ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज the worst period of Indian history when media has faced censorship during national emergency between 1975 to 77. This is a very important point from the point of view of examination in MCQ. You must learn this. Now there are some important definition which you have to know. There is first one is publish. What do you mean by publish? Publish refers to the news report, article, interview, stories, etc. that are printed in newspaper, books, magazine for a wide audience to read. Means mass of people to read and know the news. Okay. And censorship. What is censorship? This refers to the power that government has to disallow media from publishing or showing certain stories. This is censorship is the in which government does not allowed media from publishing and showing certain stories. Okay. This is done by in sense of movies and all. In which if there is not a proper content then government has the power to stop the that movie or certain stories for showing. Third one is broadcast. In this chapter the word broadcast is used to refer to a TV or radio program that is widely transmitted to public. Okay. Broadcast is this is a term used for television and radio programs and which is spreading widely.
transmitted. Now the last definition is public protest, in which when a large number of people come together and openly state their opposition to some issues. When a large number of peoples come together and openly state their opposition to some issues, किसी रीज़न के लिए या किसी इशू के लिए जब ढेर सारे पीपल इकट्ठे हो जाते हैं और उसको वो खुल के अपोज करते हैं, उसे कहा जाता है पब्लिक प्रोटेस्ट. ठीक है, जिस तरीके से उसमें वो क्या किया जाता है, मीन्स दे आर ऑर्गेनाइजिंग अ रैली, स्टार्टिंग अ सिग्नेचर कैंपेन्स, ब्लॉकिंग रोड एक्सेट्रा आर सम ऑफ द ways in which this type of public protest is done. Means they are organizing a rally, start some campaigns वगैरह, that is है ना, they block some road like किसान आंदोलन are doing. This kind of is public protest. Now we are talking about question and answer from your book. This is the first question. In what way does the media play an important role in democracy? है ना, इसमें हमको बताना है कि मीडिया का हमारे डेमोक्रेसी में क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. मीडिया हमें डेमोक्रेसी में क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है मीडिया प्रोवाइड न्यूज़ इन द वर्ल्ड. जो मीडिया है वो हमें पूरे देश में, दुनिया में न्यूज़ प्रोवाइड करता है. मीडिया डिस्कसिंग इवेंट टेकिंग प्लेस इन द कंट्री एंड द वर्ल्ड, है ना. मीडिया डिस्कसेस सर्टन इवेंट्स, प्रोग्राम्स जो हमारे कंट्री में या हमारे देश दुनिया में जो चल रहे हैं उनके बारे में वो डिस्कस करता है, हमें बताता है, अवगत कराता है. हमें मीडिया से हमें सूचनाएं मिलती हैं, मीन्स सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वी रिसीव फ्रॉम मीडिया. एंड मीडिया क्रिएट्स अवेयरनेस अबाउट सर्टन program or some diseases or whatever it is, studies, games and all. Means media creates awareness also to public. Now the second question, can you give this diagram a title? This diagram is given in your books, that is big business houses, how it is important and what is the role of this in media. These big business houses, they people's own or people own their own TV, radio, newspaper, है ना. In everyone knows this radio, TV, newspaper contain a lot of advertisement of products, है ना. And this media promote this product, radio, TV and newspaper, all these are the medias which promote the product through advertisement. Okay, from the advertisement people know about the utility or usefulness of the product, come to know about this importance of this product, how they are important to people. And from by seeing this advertisement, people buy this product which they seen in media. Okay, and therefore the money flow back to the big business houses, and in this way earn a lot of money through advertisement. Okay, the people which purchase the product, the money they receive, it will flow back to the big business houses again. Okay, then the answer is title. The title increases business through advertisement. Media, what is the role of media? Media promote a positive approach about a specific product of business houses with advertisement. What is the role of media? जो मीडिया होता है जो हमारे प्रोडक्ट के लिए एक पॉजिटिव अप्रोच जनरेट करता है, जिससे कि बिग बिजनेस हाउसेस में जो है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उसको बड़े स्तर पर उसको प्रमोट किया जाता है, जिससे कि पब्लिक और रीडर्स, व्यूवर्स, लिजनर्स जो है उसको देखें मीडिया के थ्रू और फिर उसको प्रोडक्ट को परचेज़ करें, और जो पैसा आता है वो अगेन जो है बिग बिजनेस हाउसेस के पास ही चला जाता है. ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन, you have read about the way in which the media sets the agenda. What kind of effects does this have a democracy? Provide 2 examples to support your point of view.
what is the set of media set of agenda? Media set the agenda through news, debate, discussion, stories, advertisement, publishing, etc. ना, मीडिया सेट द एजेंडा, किसके थ्रू एजेंडा सेट किया जाता है? न्यूज़, डिबेट, डिस्कशन, स्टोरीज, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिशिंग, all these thing. Okay, now the second part of the question, what kind of effect does this have democracy? What is the effect in democracy? In democracy, if media set the agenda of supporting the government work, then public never demanding their need with the government. Okay, इन डेमोक्रेसी अगर मीडिया एजेंडा को सेट करता है फॉर सपोर्टिंग द गवर्नमेंट वर्क, देन पब्लिक नेवर डिमांडिंग देयर नीड्स. पब्लिक जो है अपने नीड्स की डिमांड नहीं करती है गवर्नमेंट के साथ. लेकिन अगर इफ़ मीडिया सेट द रियल इश्यूज इन मीडिया एजेंडा, देन गवर्नमेंट फेसेस द प्रोटेस्ट. If media set the real issues in the media agenda, then the government faces the protest, in which kind they organize rallies demand of public to solve public issues, like there are lot of issues like road, electricity, water supply, food grain, vegetable shortage, and high rates, low rates, and older issues, etc. Okay, now we have completed all these questions, important question from the examination point of view of chapter 6 civics, understanding media. Okay, now that's all for now, and in next video I will share some multiple choice question of this chapter, understanding media. Okay, thank you so much.